मात्रा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, सारे दुनिया में जो फास्टेस्ट है, उसी मात्रा में हमको एक एनर्जी का जरूरत है। वी नीड द एनर्जी। इसलिए 10 वर्ष में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो बदलाव आया है, ये तो अवर्णनीय है। इट इज नॉट इजी टू एक्सप्लेन इन मिनट्स, बट एज फार एज एनर्जी इज कंसर्न, आई कैन ओनली, मैं सिर्फ एक ही मेंशन करता हूँ आपको। नियरली अबाउट 249-250 gigawatt was the generating capacity in 2015. आज भारत नियरली अबाउट 465 to 70 gigawatt we are producing. So you can imagine the change. Out of that 220 startup and every village connectivity. मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब मोदी जी 2014 में पद संभालने के लिए दिल्ली आया, तब 18,000 से ज्यादा गांवों को इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी नहीं था। वो तार नहीं देखे थे। They did not see the electric wire. 18,700 villages. All they have been connected. Nearly about 4 crore households, they were not connected with electricity. They have been done now. And because multi-dimensional poverty, more than 25 crore, as per this study, it is a well-studied report by many agencies. More than 25 crore people have come out of the multi-dimensional poverty. So expectation, अपेक्षा ज्यादा हो रहा है, इसलिए घर में सिर्फ जो बल्ब जलता था, आजकल घर में फैन आ रहा है, मिक्सी आ रहा है, टीवी तो सभी जगह आ ही रहा है। तो कई मैं भी एक इसमें गया था, एक गांव में, एक कुछ ऑफिस में सब स्टाफ करके काम करते हैं। तो he was trying to purchase a second hand AC. मैंने बोला ज्यादा हो जाता है ना, अभी तो मैंने PM सूर्य का लगाया, तो I want to have AC. So because of this, लोगों का अपेक्षा बढ़ रहा है। And you all know, in the entire country we are providing free food, 81 crores. Because of that and many other economic reforms, things are moving well. 25 crore people have come out, and need of the energy for both domestic consumption as well as industry consumption, it is going to become more. So thrust is to create energy infrastructure. In that direction, I had visited today here, and I am very happy and proud to witness the first-hand progress of the Green Coast Pinnapuram project, the world's first largest scale integrated renewable energy storage project. इधर तो पहले ही सोलर प्रोजेक्ट था, सोलर कैपेसिटी और ज्यादा करा के एक्सपांडिंग की सोलर कैपेसिटी, उसी पानी 1.3 TMC पानी के लिए एक रिजर्वायर कंस्ट्रक्शन किया हाई लेवल पर, लोअर लेवल पर और एक रिजर्वायर with the solar energy that is again shifted back to the upper level, higher level reservoir, and same water is recirculated for the
जनरेशन ऑफ एनर्जी। इसका महत्व हम लोगों को समझना चाहिए और मोदी जी सरकार आने के बाद, अभी चंद्रबाबू गारू का सरकार आने के बाद, दिस हैज picked up very well because our policy is that should whoever does whoever comes with innovative ideas and who takes the risk and tries to expand and enlarge the energy capacity of the country, our government is supporting, trying to give more and more all clearances within the framework. Yes, by that, today solar capacity of this Greenko Pinnapuram project, 4,000 megawatt total, and 1,000 megawatts wind, 1680 megawatts pump storage, and other with the solar. These are all the things which he has done, and this is the first of its kind. The same pipeline is used for the generation of electricity from the higher level reservoir, and same it is sent back, of course, with the pressure of pump to the same reservoir. When there is no solar energy in the evening, for the firm and dispatchable energy, तो इसीलिए इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन में भी काम किया है. Honorable Prime Minister Narendra Modi has laid the foundation stone